गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। बात हो रही है आज पांचवें टेस्ट मैच के बारे में। अभी तो 6 दिन बाकी हैं उस टेस्ट मैच में, लेकिन मैंने कहा यार बहुत हमने बातें करी पॉलिटिक्स और कॉन्ट्रैक्ट्स और फिलाना ये सब ठीक है, टॉपिकल चीजें हैं, बट थोड़ी गाड़ी घुमाते हैं वापस पटरी पे। टेस्ट क्रिकेट के बारे में अभी भी पांचवा टेस्ट मैच है। डेड रबर तो नहीं कहूंगा, बिकॉज कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं इंडियन टीम में जो अगर खेलेंगे तो उनके लिए ये डेड रबर नहीं है, और अगर एक दो अंदर भी आएंगे, चाहे वो अपने डेब्यू पे हो या रैंडम एक मौका मिले कुछ प्लेयर्स को, इट इज फार मोर देन अ डेड रबर फॉर दीज प्लेयर्स। तो दोस्तों ऐसे दो खिलाड़ी हैं, एक रजत पाटीदार जो 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, अभी तक एक पारी को छोड़ के मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। उन्होंने 32 मारे एक एक इनिंग्स में। उसके बाद ही इज स्ट्रगलिंग, ही इज आई डोंट नो हाउ डू वी से, आई मीन आप लोग ने भी मैच देखा है, आप में से बहुत व्यूअर्स ने यहाँ पे कमेंट भी किया है। ऐसा नहीं है कि रजत पाटीदार टेस्ट खेलने के लायक नहीं है भाई, 9 साल से बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, अच्छे अच्छे आंकड़े हैं फर्स्ट क्लास में। जब मध्य प्रदेश जीती रणजी ट्रॉफी कुछ साल पहले, तो उन्होंने फाइनल में 100 मारा, और फाइनल से पहले उनका योगदान बहुत था। तो ही इज, कहने का मतलब है दोस्तों कि ही टिक्ड एवरी कंसीवेबल बॉक्स जो पाथवे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ने दिया है एक बंदे को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए। बंदे ने वो सारे बॉक्सेस टिक किए और वो यहां तक पहुंच चुका है। अब ये अलग बात है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलकर एक टेस्ट खिलाड़ी लगते नहीं है, बहुत से कारण हो सकते हैं। अंडर कॉन्फिडेंस, आई थॉट फ्रॉम दैट 32 that he got, the footwork seems uncertain, the way he was stabbing at the spinners and getting bowled, getting caught. काबिल खिलाड़ी हैं रजत पाटीदार, आंकड़े बताते हैं, फर्स्ट क्लास करियर ये बताता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस इंटेंट या जिस अप्रोच से वो, जिस टेंटेटिव अप्रोच से वो 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और हर इनिंग्स के साथ इनका जो एवरेज है वो कम होते जा रहा है। ही जस्ट डज नॉट लुक राइट नाउ करंटली इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। तो सवाल ये है कि क्या राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की मैनेजमेंट रजत पाटीदार को एक और मौका देगी पांचवें टेस्ट मैच में? पहले भी कह चुका हूं ये, और आपकी राय यहां पर जानना चाहूंगा। इस पांचवें टेस्ट मैच के बाद लंबे समय तक, 5 महीने तकरीबन, इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगी। आईपीएल आएगा 2 महीने, उसके बाद 1 महीने का T20 वर्ल्ड कप, फिर जुलाई में जिम्बाब्वे टूर, श्रीलंका टूर, अगस्त में हल्का सा ब्रेक, फिर सितंबर के महीने में बांग्लादेश टीम यहाँ इंडिया आएगी 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए, और फिर न्यूजीलैंड भी आएगी 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को नजर रखते हुए और रिवॉर्ड करते हुए पाटीदार को शामिल किया गया स्क्वाड में, बहुत सही बात है वो। बहुत बार हम यहां बात करते हैं शोज पे कि क्यों सिलेक्टर्स डोमेस्टिक के सबसे बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स को चांसेस नहीं देती, दिए हैं। मुकेश कुमार बहुत कंसिस्टेंट है डोमेस्टिक में, वो स्क्वाड में आ चुके हैं। देवदत्त पाडिक्कल बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स लेकर डोमेस्टिक में अपना नाम बना चुके हैं, वो स्क्वाड में है। पाटीदार बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, सरफराज बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, ध्रुव जुरेल, these are all players who've done very very well at the domestic level, and their selection is utterly justified. Hats off to the selectors for picking up domestic performers in the Ranji Trophy and bringing them here. लेकिन यदि ऐसे खिलाड़ी सितंबर के महीने में जब इंडियन टीम दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेलेगी, यदि ऐसे प्लेयर्स इनके प्लान में नहीं है, तो क्या फायदा इन प्लेयर्स को पांचवें टेस्ट मैच में चांसेस देने का? मैं बात कर रहा हूं पाटीदार का। लग तो नहीं रहा है कि अभी फिलहाल वो टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार है मेंटली। आई एम सेइंग, इज देयर एनी पॉइंट इन गिविंग हिम वन मोर चांस? देयर्स टू आर्गुमेंट्स टू दिस। वन आर्गुमेंट इज, हाँ, 3 टेस्ट मैच में अच्छी अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, एक दो पारी को छोड़ के 10.5 की एवरेज से खेल रहे हैं, स्पिनर्स और पेसर्स दोनों के सामने थोड़े कमजोर लग रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट प्लेइंग हिम इन द 5th टेस्ट मैच. Hand a debut to someone like Devdutt Padikkal. The counter argument is, या the other view is कि देखो पाटीदार, जैसे मैंने कहा था, सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस देकर बहुत सीजन के बाद वो फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं. लेट्स रिवॉर्ड द सेम क्राइटेरिया व्हिच वी द सेलेक्टर्स अप्लाइड व्हेन सिलेक्टिंग पाटीदार. Let's reward that and say, you know what? Before you go back to domestic cricket, maybe for the last time in the Indian team, let's give you one more chance to do well. हो सकता है कि द्रविड़ और रोहित ऐसे सोचते होंगे, जिसका मैंने कहा था फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे आखिरी मैच में. But maybe they're saying, you know what? Let's give him one last chance. Let's not send Patidar back to domestic cricket इस ख्याल से कि यार काश काश मैं कुछ करता, काश. तो शायद ये काश काश फैक्टर से पाटीदार को एक और मौका मिलेगा. बट
द बिगर पॉइंट इज अगर वो नहीं है आपके प्लान्स में सितंबर के महीने में, जब तक विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल सब आएंगे, तो क्या फायदा इनको एक मैच देकर? Maybe you want to hand in Devdutt Padikkal, who's been extremely consistent in first class cricket and for India A. And so you know what? Maybe you can bat. अब जहां पर देवदत्त पाडिक्कल की बात है दोस्तों, वो कर्नाटका के लिए, यहां पर मैं रेड बॉल क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूं, वो ओपनर के तौर पे ज्यादातर खेलते रहे। पिछले 7 महीने में, 8 महीने में रेड बॉल क्रिकेट में वो ओपनिंग कर चुके हैं और 3 पे खेल चुके हैं। दोनों कर्नाटका के लिए और इंडिया ए के लिए ओपनिंग करते समय उन्होंने 100 लगाए हैं। कर्नाटका के लिए, इंडिया ए के लिए नंबर 3 पे खेलते हुए उन्होंने कर्नाटका के लिए 100 लगाए हैं और इंडिया ए के लिए वो नंबर 4 पे नहीं खेलते, जहां पर पाटीदार खेल रहे थे विराट कोहली के गैर हाजिरी में। ना, पाटीदार स्पेसिफिकली नंबर 4 के खिलाड़ी है, उनको नंबर 4 पे एक स्पेसिफिक रोल दिया गया था टेस्ट क्रिकेट में। अब पाडिक्कल पेशे से ओपनर हैं और कई कबार वो 3 पे खेलते हैं। डू यू वांट टू हैव एन ओपनर हु समटाइम्स बैट्स एट 3 बैटिंग एट नंबर 4? नंबर 4 दोस्तों, आप जानते हैं इंडियन क्रिकेट के इतिहास में नंबर 4 एक बहुत बहुत अहम जगह है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एक समय पर मोहम्मद अजहरुद्दीन। Not to say that Rajat Patidar looked like a number 4, but it's a very specific spot just for one test match. Do you want to bring in Padikkal for Patidar and have him bat at number 4 and then perhaps not pick him again for a long time? By not picking for a long time, कहने का मतलब ये है कि विराट कोहली आएंगे वापस, केएल राहुल आएंगे वापस, ऋषभ पंत आएंगे वापस, right? So when you have to vacate certain spots and players like Sarfaraz, Jurel, Patidar, perhaps even Padikkal, when they're just keeping the seat warm for a bigger player, you know कि इनका shelf life कहीं ना कहीं कम है। तो यहाँ पे आज के लाइव स्ट्रीमर, मैं आपसे आपसे जानना चाहूंगा इस लाइव स्ट्रीम पर, who do you think should bat at number 4 in the 5th test? Should the selectors, should the management apply the same radar they applied on Patidar when bringing him into the squad and say, you know what, you're a very solid domestic performer. हो सके इस सीरीज के बाद हम आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे इंडियन स्क्वाड में. Here's one more chance to try and impress us, impress yourself, impress the system, and maybe go back to domestic cricket feeling like, ha, you know what, I finally got some runs. परंतु अगर रन नहीं आए पाटीदार के और उनका एवरेज 10 से शायद 9 या 8 तक गिरे, aren't you sending that same poor fellow back into domestic cricket even more crestfallen, even more crushed? It's a tough one. My gut feeling says they will give a debut to Padikkal for this one test match. But what do you think? Let's see कि आपके व्यूज आज क्या है आज के शो पर. चलिए कमेंट्स पे आते हैं. मनीष कह रहे लास्ट चांस शुड बी गिवन टू पाटीदार. पाडिक्कल इज टॉप ऑर्डर बैट्समैन. बिल्कुल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था. गायकवाड पाडिक्कल शुड रिप्लेस रोहित शर्मा इन कमिंग इयर्स. यस, वेरी वेरी ग्लैड टू सी मनीष के ऋतुराज गायकवाड फॉर्म में वापस आकर उन्होंने एक 80 कुछ मारे अभी महाराष्ट्र के लिए. होपफुली ही स्टेज फिट and I think he's a player who could play for at least 7-8 years for India. Shayan saying, I don't think there'll be a 5th test match as the weather is bad. So what's the point of giving Padikkal the opportunity? It's supposed to snow until the 3rd in Dharamshala. Let's see. Wrong time to be hosting a test match at the end of winter. But ठीक है, अगर मैच नहीं होना है तो आप क्या कह रहे हो कि Padikkal को मत खिलाओ और पाटीदार को खिलाओ, और अगर धूप निकल गई मैच हुआ. It's a tricky one. Weather won't bother much. Ground dry the cricket in that region during spring is my personal experience. बात सही है. हमने कल के शो पे, कल के क्रिकेट नेक्स्ट शो पर ये डिस्कस किया था. It's got a fantastic drainage system. पर वही है, अगर वाकई में forecast says I think snow till the 3rd or 4th और मैच है 7 को, अगर बारिश के कारण मैच रुक जाता है या मैच पूरा नहीं होता है, how does it affect the team combination? ये अच्छी वाली बात है. England get a real openers after 5 years of Cook retirement. Yes, that's true. Jai Bumrah comes in for Siraj. Akash, and my humble opinion, not to be taken seriously. Washi should come in. Well, Washington Sundar has been released to go play the semi-finals for Tamil Nadu. So Washington Sundar will not be part of the squad for the 5th test match. You don't mind a chance, Patta, that's fine. Rahi baat Pacers ki. Dharamshala has got bounce in it. I'm thinking the team management might play 3 Pacers and drop a spinner. Maybe they'll give rest to Jadeja. हालांकि I don't think Jadeja को rest की जरूरत है, but Kuldeep will get good bounce there. Ashwin might get good bounce. Of the 3 spinners, Jadeja might end up being the least effective
if the Dharamshala ground plays to reputation. Maybe, small chance, they might actually play Akash Deep, Siraj, and Bumrah. देख सकते हैं ये. Why not reward another domestic performance like Baba Indrajit for number 4 instead of top order particle? It's a good point, but unfortunately they've already named the squad, so they're not going to bring in Baba Indrajit right now. Squad के हिस्सा वो नहीं है. आने वाले series में जरूर they should and could, but not for this match. The squad is not going to change. Good morning, Barsana. For Australia tour, India need to invest on left arm spinner. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. 3 pacers, 2 spinners. I think so, Manish. I think so as well. Akash Tyagi कह रहे हैं Yashasvi Shubman Shaw had a first class average above 60. That's why all three were given a chance. Patidar average is in mid 40. Again, but you're talking about 3 openers and one number 4-5. So 4-5 mein average thoda kam to rahega, but that's a good point. Devdutt is young, so give him a chance. I think Devdutt Padikkal will indeed be given a chance in this test match. I think the chapter is shut on Patidar. Kuldeep should play Dharamshala test. He's done good with bat and ball. Akash Deep and Bumrah, 2 pacers. Yes, 2017 में चौथे टेस्ट मैच में जब इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया को हराने की जरूरत थी तो डेब्यू दिया गया था और डे 1 ऑफ दैट फोर्थ टेस्ट मैच कुलदीप ने 4 विकेट लिए तो आई थिंक कुलदीप विल प्ले दे माइट रेस्ट जडेजा since pitch is assisting pacers Akashdeep Siraj Bumrah all should play yes that's what we're all saying Patidar को दे दो एक chance but Padikkal looks likely सही बात है I think they will strongly consider giving Patidar one more chance knowing Rahul Dravid's mentality. Being an opener playing at number 4 or 5 doesn't matter. Oh, no, it really does matter, my friend. As even MST, when he started, played at number 7, then asked to be at number 3 by Saurabh, sir. Did Dhoni bat at number 3 in Test cricket? I don't think so. Dhoni was a very, very specific. हम यहाँ Test match के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त. One day के नहीं. Dhoni didn't bat at number 3 in Tests. It's a good audition going on till Virat comes back. Interesting. I may sound harsh, just give Python a chance to make sure he's failure. That's harsh, Dr. Saab. That's very, very harsh. Mumbai players get maximum chances like Vinod Kambli or Rohit Sharma also deserve chances. Good point, good point, good point. Yes, good point. The other particle might play, says Ashan Sharma. If anyone in the top 3 is injured in the future, will know how he plays. Yes, good point. India 11, Rohit, Jaiswal, Gill, Padikkal, Sarfaraz, Jadeja, Ashwin, Akash, Bumrah, Siraj. So you have rested Kuldeep. Ooh, Kuldeep in Dharamshala. Bold call, bold call. ये भाई ये केएल राहुल की ग्रह चेक करवाइए बीसीसीआई इसकी कुंडली जब भी फॉर्म में आता है. Yes, we did a whole show on him yesterday on being KL Rahul. अफसोस की बात है. Gaikwad is not even in top 10 runs scored Ranji Trophy. Well, that's because he's been injured, but on his comeback innings, he got 80 something. So he'll definitely be there. He was there. He was picked in the test squad for South Africa, but he got injured. तो जैसे ही वो 2-3 और matches खेलेंगे, there'll be no doubt because he's a very, very consistent domestic performer. He was injured for about 3 months. He was supposed to bat at as opener in South Africa, but he got injured. So I have no doubt that a player of Gaikwad's quality will definitely come back. And he's been Akash. He's been very, very consistent. So no doubt he'll be there. Great to see BCCI extending contract to 5 more pacers. Sounds good on paper, but क्या होगा इन pacers का बताइए. जब तक results नहीं आए मेरे लिए ये सब हवा है. Dharamshala has pace, bounce, and seam. Yes, still remember Umesh Yadav's player in last test match. Yes, a special. That's why I think 3 pacers. Hello, Jamie. और तो एंजर को पूरा धो दिया with green. Oh yes, my fantasy captain 174 not out. भरपूर points थे मुझे Cameron Green ने आज और कल. Don't you think instead of totally shunting out Shreyas and Ishan, they both alongside KL and Hardik should have been given grade C contract? Yes, we discussed this at length on 3 different shows. Ramasubramaniam ji. KL definitely should not have been placed in the contract he's in. Hardik Pandya, who misses half the year, should definitely not have been given the contract he got. I think regards to Shreyas and Ishan, we've discussed this on about 5, 6, 7 shows over the last few days. It's not about what them actually not playing. It's something that they've said or done, the impression they've given to the selectors. It hasn't sat well. And I'm glad that tough calls are being taken. And again, I think it's a precedent had to be set.
I still think Shreyas Iyer, like I said yesterday, day four, I think Shreyas Iyer and Ishan Kishan are somewhat soft targets, not scapegoats. I won't go as far as to call them scapegoats, but they're soft targets. I think in some way a message had to be sent out, and it has been sent out. So I don't think they should have been given grade C contracts. Hopefully, a lot of players learn from now that you cannot be faking injuries. You cannot be saying one thing and doing the opposite. You cannot be showing a preference for skipping red ball matches. So again, a bit unfair overall, but it's as far as I'm concerned, it's okay. Why is KL Rahul always injured? If I knew that, I would be running the BCCI, my friend. Is the playing 11 out for next match? No, not yet. Abhi 6 din baki hai. We'll know at the toss on the 7th. India does not announce their 11 until the toss. England and Australia do it the day before. I will give Patidar one more chance at number 4. It's irrelevant till Kohli returns. ठीक है. With contract situation, will Ishan Shreyas miss World Cup 24? No, no, हमने कल डिस्कस किया. श्रेयस अय्यर वैसे भी मेरे हिसाब से T20 World Cup नहीं जाने वाले थे. Ishan Kishan, like I said yesterday and day before, if he scores 400, 450 runs, he will definitely go to the T20 World Cup as the second keeper behind Jitesh Sharma. How the hell on earth Hardik gets A grade contact? I know, I know. We've discussed this at length. Very, very strange. Just out of context, how are your auditions going on? Good question. Thank you. I've given 4 in the last week. I've nailed one. That's a good sign. Other one, I've been creatively signed. यानी कि इनको काम अच्छा लगा. अभी पैसों की बात है और बाकी तो नहीं हुए. But ठीक है. 1 out of 4. I'll take that. Thank you for asking, Kumar Kanishk. Ujwal is still confused. Players look fit and in great shape. How come they get injured very frequently? लाख 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 रुपए का सवाल पूछा है भैया. प्रश्न बहुत अच्छा है तोहार. Who knows what the reason is, my friend? Who knows? I've given up putting 2 and 2 together because when I do put 2 and 2 together, I get 6. So none of Paddi or Patti, only Akshar or Sundar. Well, that means only Akshar because Sundar, like the BCCI announced yesterday, has been released from the squad. Our pacers are damn good. All pacers. अरे 7वां टेस्ट मैच खेले लगातार. ये स्किप नहीं करते मैचेस भैया. ये ऑस्ट्रेलियन वाले हैं. इनका जिगरा कुछ और है भाई. 7 टेस्ट मैच खेले हैं लगातार. बीच में फालतू का T20 सीरीज खेले हैं. बताइए, तभी तो ये टीम पिछले 3 साल में T20 वर्ल्ड कप जीती है, WTC जीती है और वनडे वर्ल्ड कप जीती है. तभी तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले हैं भैया. बहुत कुछ सीखना है हम लोग को इनसे. जय भाई, इज हार्दिक सच ए यूनिक टैलेंट इंडिया? इसको टेस्ट नहीं खेले तो रिटायर हो जा. वेल, हार्दिक पांड्या हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट लॉन्ग टाइम अगो. शायद आप लोग जानते नहीं है, 5.5 साल से ऊपर हो चुके हैं हार्दिक पांड्या को एक भी फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए बड़ौदा के लिए. अनऑफिशियली 5 साल से सिलेक्टर्स उन्हें नहीं पिक कर रहे. आपसी में डायलॉग हो गया उनसे. 2019 की बात कर रहा हूं मैं. इनकी बात हो गई कि हम टेस्ट क्रिकेट में नहीं खिलाएंगे आपको. और हार्दिक पांड्या को खुद समझ है कि उनकी बॉडी को तीनों फॉर्मेट्स में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है. सो ये एक बार दोबारा कहूंगा मैं. मुझे लगता है बहुत लोग इस गलतफहमी में पाल रहे हैं कि ये बंदा अभी भी टेस्ट क्रिकेट के लिए ओपन है. नहीं, 6 साल होने वाले हैं जब से वो रेड बॉल क्रिकेट खेले हैं. सो प्लीज do not associate Hardik Pandya with a test player. He doesn't need to announce his just like Bhuvneshwar Kumar, he does not need to announce that he is retired from test cricket when the selectors and him are fully aware कि ये टेस्ट में सिलेक्ट नहीं होंगे. नारायण जगदीशन एक कीपर है, क्यों सिलेक्ट नहीं किया अब तक? फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. हाँ बिल्कुल, दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट. पर आई थिंक जगदीशन शायद तो ओपन वो टॉप ऑर्डर प्लेयर है और टॉप ऑर्डर में तो भाई जगह है नहीं. जगह बनती है तो 5 और 6 में. इसीलिए ध्रुव जुरेल और केएस भरत आए हैं. आई थिंक अगर नारायण जगदीशन को लेट्स सी व्हाट इज एन जगदीशन प्ले इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट. इनका पेज खोलते हैं. आई थिंक वो टॉप ऑर्डर प्लेयर है शायद. यस, एन जगदीशन ओपन करते हैं और ओपन में तो जगह नहीं बनती टीम में. तो यदि जगदीशन को आना है इंडियन टीम में, उनको 5 और 6 पे शिफ्ट करना पड़ेगा भाई. Why Ashwin is not getting A plus? Because he only plays one format. Look at the other 4 names in the A plus category. They all play 3 formats. आप केवल एक फॉर्मेट खेलते हो, नहीं बनता ना A plus. Why Cameron Green don't prioritize IPL? He doesn't want money.
Probably not. I think we've seen that Mitchell Stark can afford to skip 6 years of the IPL. इनको पैसे चाहिए, but they have bigger priorities in life. Yeah, hats off to them. Aside from cricket, I was a fan of Tom Walters right from his first movie, Charas. Very sweet of you. Are you into movies, web series? Yes. Since 2020, I started to dabble. I've got a movie. It's coming out. Yash Raj movie. I've done a South Indian movie. I've done two Hindi movies. I was in the Netflix movie, The Archies, and I've done 5 web series. And I've got 4 more web series and a movie coming out in the next few months. So, yes, sir. That's the answer. नॉट विनिंग एनी ट्रॉफीज इज रीजिंग इंटरेस्ट इन क्रिकेट फॉर मी सेम यार ये तो मेरा जॉब है तो मैं देखता हूँ लेकिन यार 11 साल हो गए साला एक ट्रॉफी नहीं मिला यार ये दुख काहे कम नहीं होता बे anyone who has excellent IPL will definitely make a comeback in T20 squad बिल्कुल सही कह रहे हो जब दिनेश कार्तिक का कमबैक हो सकता है तो सबका वो तो दिनेश कार्तिक का तो वो डिज्नीलैंड वाला ट्रिप था उनके लिए आओ घूमे चले कुछ करना तो है नहीं think last year in BGT Dharamshala test match was yep the outfield had fungus the outfield was relayed and because of the harsh winter conditions the Dharamshala ground couldn't get ready. I'm surprised it came back but then we know the proximity that the Dharamshala ground has to you know where I'm going with this. I don't need to say it. You know where I'm going with this. Dr. Saab keh rahe regarding how player in good shape are getting injured because of gym culture. Endurance is developed by running and practice. Yes, बहुत बार viewers ने ये बात कही है कि ये ज्यादा gym tone. I think they go to the gym more to make reels. You know, you see them on those doing the leg press and the bench press and upside down lat pull and all. It looks good, man, when your body is tight and rippling. But यार क्रिकेट में इसको कोई जरूरत नहीं है कपिल देव 135 136 टेस्ट मैच खेले एक बार कभी इंजरी के कारण ड्रॉप नहीं हुए थे वो भाई दंड पहलो भागो आप बिल्कुल सही कह रहे हो we're too much into the gym. Irfan Pathan's career was hampered by going to the gym. Simon Jones, आपको याद है Simon Jones, the Welsh fast bowler who played for England. Simon Jones जब आया था और Simon Jones जब गया था भाई वो बिल्कुल ऐसे यूं चल रहा है his body was too tight he couldn't cope with it he became like Arnold Schwarzenegger मुझे अभी भी याद है 2006 में इस बात का मैंने जिक्र किया था 2006 में इंग्लैंड की टीम आई थी इंडिया 3 टेस्ट मैच के लिए तो इनके 2 वार्म अप मैचेस थे एक MCA 11 के सामने ब्रैबॉर्न में और दूसरा था बोर्ड प्रेसिडेंट्स मैच बड़ौदा में तो मैं गया था वो मैंने मैच कवर भी किया था and just when England the touring England team was taking the field I was standing at the gate and you hear this it's a very distinct sound ये जो spikes पे हम लोग spikes नीचे ये जो आवाज आती है जब आप कंक्रीट या सीमेंट पे चलते हो तो जब 11 प्लेयर उतरते एक साथ तो आवाज बड़ी तेज निकली मैंने कहा भाई सब गए पॉल कॉलिंगवुड गया ट्रेस्कॉथिक गया वॉन गया हार्मिसन गया सब गया साइमन जोन्स सबसे आखिरी आया और जिस अंदाज में साइमन जोन्स आया भाई छाती 36 छाती नहीं 120 की छाती डोले इतने बड़े वेन्स पंपिंग वेन्स लाइक मैंने कहा यार ये फास्ट बॉलर कैसे है ही लुक्स लाइक ही इज गोइंग फॉर मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर यूनिवर्स और उसी साल खत्म हो गया उसका करियर आई थिंक इट्स these guys are too into pumping iron protein shakes भाई बॉडी बनाओ फिट रहो लेकिन विराट कोहली जैसे फिट रहो यार you know ये so I think you're right डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो वैसे आप डॉक्टर कौन से हो वो डॉक्टर वाला डॉक्टर लाइक मेडिकल डॉक्टर good question I want to get an answer from you okay back to cricket Cam Green has played once in a lifetime kind of innings he'll be a bigger threat to India than usual suspects Smith and Marnus yeah he's looking very very good on Hardik POV I believe his batting has just is capable to improve his bowling just can't count him off with bat pata nahi yaar he's bowled some fantastic deliveries Asia Cup mein he bowled that ball to Mohammad Rizwan but World Cup mein mujhe wo thode off lage you know so he's so injury prone um I think yes the batting is not of the high standard it was but if he's not bowling at full tilt does India need him do you need Hardik Pandya the all-rounder or do you need Hardik Pandya just the batsman? I don't think just the batsman walks into the team anymore. Rishabh Jain कह रहे हैं Hardik when he was new player he wanted to be careless of India. He's not even to contribute what Ryan had considered as all-rounder for India. Ouch! How did Sanju get contract? He's played a lot of white ball cricket over the last few years. That's what. Jay bhai, how much Rohit, Virat, MS have impacted other players' chances over generation with just being how good they are? बहुत यार. You always felt bad for all the keepers.
नमन ओझा, दिनेश कार्तिक, जब तक धोनी थे। बट वही है यार, हम एक रेयर जनरेशन टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं जहां विराट और धोनी की बात हो। इट हैपेंस, बट यार लुक एट व्हाट वी गॉटन बाय वाचिंग दीज थ्री लेजेंड्स यार। हम बोल देते हैं अनुराग ठाकुर स्टेडियम, जे बात मनीष, जे बात। You are a gifted storyteller. Please continue with Chris on this channel whenever you get time. Thank you, my friend. And you can also hop over to my main channel where I tell stories a lot. But yes, after this series and before the IPL, I will come back with some cricket anecdotes for you. Thank you, Kishle Kumar. When Dharamshala outfield was not ready last year during BGT, why didn't they shift to Mohali? Pata nahi. Indore was a undercooked track on which India lost. डीवाई पाटिल, अरे डीवाई पाटिल, डीवाई पाटिल, डीवाई पाटिल, डीवाई पाटिल, डीवाई पाटिल, ये देखिए डीवाई पाटिल, फील्ड ऑफ ड्रीम्स, द स्टोरी बिहाइंड द डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम बाय जेम्स ऑल्टर, फॉरवर्ड बाय राहुल द्रविड़। ये किताब दोस्तों, ये विजय पाटिल साहब है, इनके फादर ने ये, इनके फादर डीवाई पाटिल साहब, he and Vijay and the family put together this fantastic stadium about 12-13 years ago। और जब इसका पहली बार इस ग्राउंड में आईपीएल खेला गया था 2011 consistently 10-11 sorry, Vijay Patil got in touch with me. He got in touch with Harsha Bogle and said, I'm looking for a journalist who will write a book on my story, the story of my stadium. And the first name that Harsha had was me. So he called me up. मुझे अभी याद है, अक्टूबर 2010 की बात है ये। मैं 10 स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा था मुंबई के लोअर परेल में। He said, Jamie, I want you to speak to Vijay. This book, तो मैं जब ये स्टेडियम बन चुका था, लेकिन पूरे इसके ब्लूप्रिंट्स, इनके आर्किटेक्ट, सारे बड़े बड़े नाम जो जुड़े थे इस स्टेडियम को बनाने में, मैं उनसे मिला। एंड विजय, लवली फोटो ऑफ हिम टॉसिंग द बॉल, ही आस्क्ड मी, जेमी, व्हाट शुड वी कॉल आवर बुक? मैंने कहा, सर, वी गोना कॉल इट फील्ड ऑफ ड्रीम्स। तो ये जो बेहतरीन स्पोर्ट्स स्टेडियम आपने अपने परिवार के साथ बनाया, ये आपके सपनों, आपके ख्वाबों के बेस पे बनाया। ये बुक दोस्तों कभी मार्केट पे नहीं गया। विजय वाज वेरी श्योर he did not want to make money off this book. He wanted every single player, official, umpire, franchise person, anybody who walked into the doors of the stadium during the 2011 IPL, he wanted to give them this book. So I know very, very well the quality, the consistency, and really what the Dr. D.Y. Patil Stadium should be doing. और अफसोस की बात है, it got an international match against Australia in 2013 I believe, लेकिन बारिश के कारण वो मैच हुआ नहीं। मैं चाहता हूं कि ये बेहतरीन स्टेडियम, of course I have a bias because I know the ground so well and I know Vijay and his team well, but I really hope that, you know, Ranji Trophy, one days, T20s, beyond the IPL, that ground gets more matches. Thank you for rekindling my memories, Shaurya. Devesh saying, I have heard Patidar has good batting technique against fast bowler, so I think Patidar would be better choice for Dharamshala test. बात सही है, बट यार उछाल उछाल तो है वहां पे। इंग्लैंड जरूर 3 पेसेस खिलाएंगे इस करंट फॉर्म में। आई थिंक पाटीदार इज अ वॉकिंग विकेट इफ धर्मशाला हैज बाउंस, माय गट फीलिंग। यस, आई एम डॉक्टर एमबीबीएस फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स रायपुर। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया ये जानकारी शेयर करने के लिए सर। स्पोर्ट्स फैन, आफ्टर removed from contracts, do you feel will Shreyas and Ishan face consequences in Test England over Summer 2? No, I don't think so. Jay Bhai must come to know about Cam Green's medical condition, such an inspiring lad. What a inspiration. And what, he's 24, I believe? Amazing. Why New Zealand always struggles against Australia after being ahead in the game so many times they fail to cross the line? It's called the Big Brother syndrome. Your thoughts on Monash, Labuschagne, and season batting in the last 12 months? Smith, very, very inconsistent. Labuschagne, I think that golden run of Labuschagne is gone, unfortunately. जैसे हार्दिक पांड्या क्यों, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल के शो पे, आज के शो पर। फील्ड ऑफ ड्रीम्स, यस, माय फेवरेट हॉलीवुड स्पोर्ट्स मूवी फील्ड ऑफ ड्रीम्स। आई सॉ इट इन 1989। हम लोग फैमिली हॉलिडे के लिए गए थे। मैं केवल 8 साल का था। मेरे फादर बेसबॉल के बहुत 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 शौकीन थे, तो हम दोनों देखने गए। ये इकलौता फिल्म है दोस्तों, जब भी मैं देखता हूं, खासकर वो एंड सीन, अभी भी इस उम्र में आंख में आंसू आते हैं, especially since my father passed away. If you ever had a connection with your father about sports, और आप कुछ उनके साथ हासिल नहीं कर सके, it's a film which gets you right in the heart. Fantastic film, my favorite, my top 3 film of all time, along with Shawshank Redemption and The Usual Suspects, and my favorite sports film, Field of Dreams. For example, Sean Marsh always
look good, fit, but in most of the time gym culture. Yes, good point. Cannot believe Kane Williamson got run out. हाँ मैंने देखा स्कोर कार्ड अभी देखूंगा highlights. I watched the last session. How do you see Reliance Disney merger? Will subscribers suffer to this monopoly in the future? It's a merger that had to happen when two powerful brands meet. Will the subscribers suffer? I don't think so because to be fair to Reliance, they've I know the app sometimes crashes, but as the customer experience goes, mine has been fantastic with them. So I don't think it's actually going to be a subscriber problem. I don't. How the Disney angle factors in, I'm very keen to see that. जय भाई महाराजा का फर्स्ट लुक मस्त लगा थैंक यू सीम्स अ बिग बजट मूवी इट्स अ ग्रैंड मूवी इट्स नॉट बिग बजट उसमें कोई स्टार नहीं है उसमें आमिर खान के बेटे हैं जुनैद वो तो कहीं से स्टार नहीं है इनकी पहली फिल्म है और द मेन एक्टर इज जयदीप भाई जयदीप अहलावत ब्रिलियंट एक्टर लेकिन स्टार नहीं है तो इसमें इतने पैसे हाँ हमारा यशराज के हिसाब से पैसे बहुत बहुत कम है but yes compared to many other films it does give the impression of being a big budget. I believe it's a very important very well made film obvious bias aside and I hope people like it और सबसे बड़ी बात है मेरा बहुत बड़ा रोल है उसमें तो होपफुली मैं 3 साल से वेट कर रहा हूँ यार इस फिल्म की जो थिंक 20 से वेरी हार्श सुबह 6 शो कर चुका हूँ इस पे भाई 6 शो कर चुका हूँ इस पे दोबारा नहीं कहूंगा मैं Did you play baseball? Yes, we grew up playing softball, baseball. Cricket, tougher, any day. Cam Green might be suffering from milder form of chronic kidney disease. Huh, exactly kya hai? I don't know. I'll find out. According to stats, Marnus Labuschagne was the luckiest. Not was, is. Your thoughts on Cameron Green batting? Already discussed. Fantastic player. I'm very glad that he's been brought back and kept at number 4. He's my fantasy captain. So I got about 350 odd points from him today. I'm very happy. Sir, which platform you enjoy watching cricket? I actually watch it most on Tata Sky because it comes 2 balls faster than all these. But overall, if you want an option, I will say Geo Cinema. For me, it doesn't buffer at all. Sony Live Barbad, fan code Barbad, Hotstar decent, but for me, Geo Cinema. Why does Indian batsmen don't bowl anymore? There was that. Oh yes, बहुत shows हम कर चुके हैं. नहीं करना है जितना बॉलिंग करोगे उतने आप थक जाओगे चोट लगने के chances ज्यादा है. Wow, Jaydeep Alawat, how was working with him? Fantastic. I walked into the room. We had to do those round table readings और मैं काफी लेट साइन हुआ था फिल्म के लिए बाकी सारे एक्टर्स लॉक हो चुके थे तो मैं मुंबई गया था यशराज स्टूडियोज के अंदर पहली बार and I went down after the costume and look test and there was a director there was Junaid there was Mark Bennington another actor and the director writer and there was Jaydeep bhai रॉब है उस बंदे का यार and this was just after we'd seen ये 2021 जैन की बात है तो हाथीराम चौधरी पाताल लोग छा गए थे वो कमाल के एक्टर भाई कमाल के एक्टर शब्द बहुत कम बोलते हैं वो ऑफसेट लेकिन भाई जेम व गाय एंड ही वाज माय फादर स्टूडेंट इन एफटीआईआई सो द मोमेंट ही सॉ मी ही इज लाइक उनके अंदाज में यार भाई टॉम साहब की याद आ गई सो very nice working with him. Dharamshala is a good ground even for the practice before Australia in this way. Oh, it's a fantastic ground. I've been fortunate to go there twice to cover IPL matches. I was not a fan of MLB, but lately got interested after watching Toronto Blue Jays. Oh, it's a fantastic game. I actually watched baseball at a much earlier age than I watched cricket, so I love both sports. Or until about 2008, 9, maybe 2010, ESPN used to show so many baseball games on Star. I missed that. Thoughts on Akash Deep Singh on red ball cricket? Yes, बहुत shows हम कर चुके हैं. मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा जो मैंने कहा था दिसंबर के महीने में सिलेक्टर्स को 2 साल लगे ये समझने में कि आकाशदीप साला ये तो वनडे भी खेल सकता है उसको आपने वनडे दिए तो वो मैन ऑफ द सीरीज निकला. आई डोंट नो व्हाई दे नॉट प्लेइंग हिम इन रेड बॉल क्रिकेट. हाँ डोमेस्टिक में वो बहुत कम रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं लेकिन वो कैंट के लिए खेलने गए 3-4 गेम्स. ऑस्ट्रेलिया टूर आ रही है 10 महीने में खिलाओ बंदे को उसको बोलो ये जो आपने ऑर्डर दिया है सबको डोमेस्टिक खेलो. आकाशदीप को बोलो सॉरी आकाशदीप क्या बोल रहा हूँ डिड यू एस्क मी आकाशदीप अर्शदीप हाँ मैं डर गया अर्शदीप को बोलो भाई तुम ऑस्ट्रेलिया टूर जा सकते हो तुम हल्की सी अपनी पेस बढ़ाओ और तुम पंजाब के लिए 3-4 रणजी मैच खेलो यार. होपफुली I don't think he'll have time to play Ranji because again the Ranji will probably start in January but have
Whatever it takes, if that means he goes to county again for May, June, July, after the T20 World Cup, usko bhejo. You need Arshdeep playing in Australia. According to you, which stadium is beautiful in India? India, Dharamshala, World Gall. With Steve Smith's technique, he's always going to struggle with his age. His every dismissals have increased. LBW also nicking off. He now hops across the stump so much, and his hands are not working the right way that he's giving a lot of nicks to the slips also. Dharamshala weather forecast around 10 degrees, where sun will be overhead. Warder Atkinson will be handful. Bilkul. It's supposed to snow until the third or fourth, so I think we're in for a somewhat weather hit, but entertaining test match, my friends. चलिए साथियों, मजा आ गया. फ्राइडे है, आप लोग एंजॉय करिए. फ्राइडे वीकेंड एंजॉय करिए. आपसे दोबारा मिलेंगे मंडे को. आई एम टेकिंग अ ब्रेक, playing 2 matches tomorrow. Going to spend Sunday with the family, going out. Yeah, going to be fun. Thanks for watching. Have a great Friday. Have a great weekend. मिलते हैं आपसे मंडे को.